students, class 8th, second topic of grammar and me, nouns. Read this report. ये report आप पढ़ लीजिएगा. Color the words in color are noun. Which of them are you can count in numbers. Means अब हम डिस्कस करेंगे countable and uncountable nouns की. जैसा हम सब जानते हैं कि countable noun is the name of the person and thing that can be counted. They can be used in singular and plural forms. दोनों फॉर्म्स उनकी होती है. ये सब आप रीड कर लीजिए. Objects with definite shape, units of measurement, names of people, plants, animals, insects and their parts, these all are countables. Words of classification of family, a state, a language, abstract nouns. Test for countable nouns बहुत इंपॉर्टेंट है. countable nouns have singular and plural form. A, an or the or one can be used before them. Many can be used before them. countable nouns के साथ many आता है. The names of things that cannot be counted are uncountable nouns. They can be used only in singular form. इनकी plural form नहीं होती है. इस तरह आप इन्हें पहचान सकते हो. शुगर की शुगर्स नहीं होती है. नॉलेज की नॉलेज नहीं होती है. तो however we can say 2 spoons of sugar, 3 pieces of information and a bowl of rice. मटीरियल नाउन जितने भी होते हैं आपके वो सारे अनकाउंटेबल होते हैं. लिक्विड्स के नाम जितने भी होते हैं आप गैसेस के नाम वो सब अनकाउंटेबल होते हैं. लैंग्वेजेस जितनी भी होती हैं वो सब अनकाउंटेबल होती हैं. मोस्ट जेरन्स जो आईएनजी वाली फॉर्म्स होती हैं वो सारी अनकाउंटेबल होती है. टू मेजर क्लासीफाई अनकाउंटेबल नाउन्स यूज ऑफ और ऑफ आफ्टर मेजरमेंट. अ प्लैंक ऑफ, अ किलो ऑफ, अ स्पून ऑफ, ये सब यूज़ होता है. टेस्ट फॉर अनकाउंटेबल नाउन्स की टेस्ट के लिए अनकाउंटेबल नाउन्स आर क्वालिफाइड बाय द अमाउंट रेदर देन अ नंबर. अमाउंट होता है उनका कितना. ठीक है. दे हैव ओनली वन फॉर्म, सिंगुलर फॉर्म. ए, एन और वन कैन नॉट बी यूज. उनके सामने ये सब यूज़ नहीं होता है. और उसमें मैनी यूज़ होता था, इसमें मच यूज़ होता है. ठीक है. अब हम इस वर्ड सर्च में से कुछ 8 पेयर्स के वर्ड्स निकालेंगे. ठीक है. मेरे को तो मिल चुके हैं, आपको ढूंढना है. मैं खाली लिख देती हूँ. ठीक है. अभी हम डिस्कस भी करेंगे, नहीं मैं आपको दिखा दूँगी. ठीक है. पहले आप लिखो अ पेयर ऑफ spectacles, SPECTACLES, spectacles यानी कि चश्मे. अ पेयर ऑफ pliers, PLIERS. अ पेयर ऑफ jeans, JEANS. अ पेयर ऑफ scissors, SCISSORS, scissors. अ पेयर ऑफ gloves, GLOVES, gloves. अ पेयर ऑफ earrings, EARRINGS, earrings. अ पेयर ऑफ shoes. अ पेयर ऑफ pajamas, PYJAMAS. ठीक है. अब यहाँ पे आपको मिल जाएगा सब कुछ. जैसे कि ग्लव्स ये रहे, ईयरिंग्स भी ये रहे, शूज़ ये रहे और जीन्स ये रही, फ्लायर्स ये रहे. ठीक है. इसी तरह आप सारे ढूंढ लेना, इसमें सारे आपको मिल जाएंगे. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. सर्कल द काउंटेबल नाउन्स एंड अंडरलाइन द अनकाउंटेबल नाउन्स. जितने भी काउंटेबल नाउन्स आएंगे उनको सर्कल करना है, अनकाउंटेबल्स को अंडरलाइन करना है. लेट्स बिगिन. द इंग्लिश लेबोरेटरी, सर्कल 8. इन आवर स्कूल, सर्कल 8. इज़ अ डिलाइटफुल प्लेस, सर्कल 8. फर्नीचर, यू कैन नॉट काउंट, अंडरलाइन इट. इज़ neatly laid out and the audio visual equipment, underline equipment, is well maintained. The display board, circle it, has information को underline करेंगे. About how the equipment, फिर underline करेंगे, works. The laboratory, circle it, has books, circle it. CDs काउंट कर सकते हैं ये सब चीज़ें. और ऑडियो कैसेट्स ये भी है. स्टेशनरी को आप अंडरलाइन कर दीजिए, स्टूडेंट्स को आप सर्कल कर दीजिए. The instructor, the person, you can count him, underline. Instructions, circle it. And then let's the students, circle students को हम गिन सकते हैं on their own. A student, circle it, can record that their voice को आप underline कर दीजिए. And then hear it. This helps us to analyze the mistakes को आप काउंट कर सकते हो. तो circle it. And make improvements को आप सर्कल कर दीजिए. Sometimes the students, circle it, are shown a film, circle it, film आप काउंट कर सकते हैं. which is usually followed by an assignment, circle it, assignment. The shorter assignments, circle it, are completed in class while the longer ones are done at home, circle it. During weekends को आप सर्कल कर देंगे और वेकेशन को आप अंडरलाइन कर देंगे. ठीक है. वेकेशन का प्लूरल वर्ड नहीं होता, याद रखिएगा. ये हो गए हमारे काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स. आगे बढ़ते हैं.
Complete the sentence with words from the box. They, Mrs. Dev बोलती हैं, children, I am planning a surprise party for Natasha. Will you help me to plan the party? Anita कहती है, auntie, your strawberry cakes are delicious. Why don't you bake one? We all want to have at least 2 slices of it. For drinks, I think a can of juice or a glass of lemonade. Lemonade शिकंजी वो बोलते हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. Boys, what about the return gifts? Auntie, I think a bar of chocolate each should be fine. Manan, I will help you to make invitation cards. I need a few sheets of colored paper and a few pots of bright colored paint. Pallav, auntie, I will make the sandwiches. I need 2 loaves, loaves, loaves of bread and a large jar of jam. Thank you, children. Now each one of you deserves a cup of hot chocolate and some cookies. Wow. Fill in the blanks with the correct nouns from the box. The school in the hills had extensive grounds. The ground here, ground, is very hard and bare. He hurts his arm, arm, while playing tennis at the club. We must find out who is supplying arms, हथियार, to the group. ठीक है, आगे बढ़ेंगे. Republic Day Parade is a grand spectacle. spectacle, spectacle. I kept losing my spectacles. ये चश्मे हैं. CLES, spectacles. Fourth, you must have at least 2 helpings of fruit, fruit, to stay healthy. You must try and eat fruits that are in season. Fruits, fruits, fruits. Brush those hairs, hairs, off the sofa before you sit down. I need to wash my hair almost every day in this weather. Sixth, with her good looks, she will be a success on the screen. Take a look, look at this letter and tell me if it is all right. Mushir, 7th, Mushir talks and behaves in a manner, manner that annoys everyone. Mangat's bad manners, bad manners, 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 and boorish behavior put me off. 8th, can you lend me 5 rupees? I am a little short of funds. FUNDS, funds. That group is collecting money for the cyclone relief fund, FUND fund. The dash, the contents of this book, contents of this book are listed on page 2. Ursula did not like the content of the article, CONTENT. दोनों के देखो different meaning है. Ramesh was in high spirits, SPIRITS, after he won the match. This fort is haunted by the spirit, my God, Atma. Sorry, yes, नहीं आएगा इसमें. Of a man who died at its gate. The peoples of the world, PEOPLES, peoples of the world got together and created the UN. The people of the nation, PEOPLE, people of the nation, protected against the war. Jane was stopped at customs, 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 and questioned. It is a custom, 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 in our house to pray together before we eat. Collective nouns. Collective noun क्या होता है? It's a group name given to the collection of people, person, animals or things. Read कर लेंगे. Fill in the blanks with collective nouns. खुद try करोगे या मैं करा दूँ? नहीं करा दूँ, ठीक है. A dash of peacocks. बहुत याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कम आपको देखने को मिलेगा. MUSTER, mussel. A dash of whales, SCHOOL, school of whales. A dash of geese, gaggle, GAGGLE, gaggle.
A dash of bees, a swarm, SWARM, swarm. A dash of soldiers, battalion, BATTALION, battalion of soldiers. A dash of wolves, a PACK, pack of wolves. A dash of herrings, a shoal, SHOAL, shoal. A dash of dried plants, herbarium, HBERBARIUM, herbarium. A dash of chickens, a brood, BROOD, brood of chickens. A dash of papers, a sheaf, SHEAF, sheaf of papers. A dash of artists, troop, TROUPE, troop. A dash of flags, bunting, BUNTING, bunting. A dash of stars, constellation, CONSTELLATION, constellation of stars. A dash of thieves, 14 पे, a gang of thieves, GANG, gang. A dash of chairs, stack, STACK, stack of chairs. थोड़ा सा इरेज कर दूँ, डटी हो रहा है, ठीक है। 16 पे चलते हैं। A dash of trees, clump, CLUMP, clump of trees. A dash of islands, a group of islands, GROUP, group. A dash of grapes, a bunch of grapes, BUNCH, bunch of grapes. A dash of policemen, a pose, POSSE. A dash of vipers, a nest of vipers. So how was the collective nouns? सारे के सारे सही जाएंगे, promise। आगे बढ़ते हैं। Fill in the blanks with suitable phrase from the box. phrases दे रखे हैं, बॉक्स में से चूज करेंगे। Ashim and Vivek belong to, they sing very well, तो हो गया a choir of singers। choir बोलते हैं ना बहुत से बच्चे, choir नहीं होता, choir होता है। learn to dance, they are planning to join a troupe of dancers, TROUPE, troupe of dancers, yeah, ठीक है, लिख देना। Orchards is tired of chasing after, and चलो यहाँ पे लगा दो chasing troop of monkeys, and लगा दो यहाँ पर swarm of bees। The orchardist is tired of chasing troop of monkeys and swarm of bees that attack the ripe fruit on the tree. He felt ever worse when we found that, सी पे आएगा, नहीं, we found a, हाँ तो यहाँ पे swarm of bees लिख दो, यहाँ पे swarm of bees आएगा थर्ड में। सो चिल्ड्रन अब चलते हैं एक्सरसाइज जी पर। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल फ्रेज फ्रॉम द बॉक्स। अशीम एंड विवेक बिलोंग टू, अच्छा बिलोंग टू अ क्वायर ऑफ सिंगर्स, इसे मार्क करो आप। choir of singers, they sing well and have recently learned to dance. They are planning to join troupe of dancers, will come here, ठीक है। The second, the orchardist is tired of chasing after troop of monkeys and flock of birds that attack the ripe fruit on the tree. He felt even worse when he found that a swarm of bees had built a hive in one of his favorite trees, ठीक है। थर्ड पे चलते हैं। While we were watching a school of dolphins and band of pirates play about in the sea, we also saw, band of pirates नहीं आएगा यहाँ पे, सॉरी इरेज करिए इसे, फिर से ट्राई करते हैं थर्ड वाला। While we were watching a school of dolphins and shoal of fish play about in the sea, we also saw a fleet of ships at a distance. Later we learned that it was following a band of pirates that had attacked the unarmed crew of sailors, ठीक है भाई। थोड़ा डिफिकल्ट था बट आई हैव मैनेज्ड फॉर यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। Abstract nouns is the name of something that you cannot touch, taste, hear, smell or see. It refers to the thing that does not have a material form. उसका कोई फॉर्म नहीं होता,
ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर अनकाउंटेबल्स, चिंता मत करो, उन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो आइए इसी के साथ शुरू करते हैं एक्सरसाइज एच, सर्कल द एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स इन दीज सेंटेंस। मुझे बहुत पसंद है एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। चलिए, द नेशनल लेवल मैच वॉज ड्यू to be held on 14th October. Our team was filled with anxiety as we had only a week to practice. Our determination to win the match was visible to our coach, and his encouragement, circle arrangement, and patience helped us to improve our skills each day. There were times when our performance was poor, but we lost neither hope, दोनों ही हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, nor confidence. On the final day of match, our supporters cheered us loudly. We played with immense enthusiasm and unity. It was a close shave, but victory is also abstract noun, was finally ours. Happiness, abstract noun, was writ large on our faces, and disappointment, again circle it, on that of our opponents. ठीक है, डन। आगे चलते हैं एक्सरसाइज आई पर। इन वर्ड्स के एडजेक्टिव्स के आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने बहुत ईजी, बहुत मज़ा आता है इनको। डिलाइटफुल, डिलाइट, डिग्निफाइड, डिग्निटी, DIGNITY, डिग्निटी, फैसिनेटिंग, फैसिनेशन, FASCINATION, फैसिनेशन, तीन करके करूँगी फिर इरेज कर दूँगी, ठीक है। एम्बिशियस, सबको पता है इसका, तो it's ambition, AMBITION, ambition. Dreadful, dread, DREAD, dread. Satisfactory, satisfaction, SATISFACTION, satisfaction. Intuitive, intuition, INTUITION, intuition. नेक्स्ट है इंटरेस्टिंग, इसका बनेगा इंटरेस्ट, INTEREST, इंटरेस्ट। सेन का बनेगा सेनिटी, SANITY। जनरस का बनेगा जेनरोसिटी, GENEROSITY, जेनरोसिटी। ग्रोइंग का पड़ेगा ग्रोथ, आपको पता है ग्रोथ एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कर्टियस का बनेगा कर्टसी, COURTESY, कर्टसी। परमानेंट का बनेगा परमानेंस, PERMANENCE। चीयरफुल का बनेगा चीयर, CHEER, चीयर। चलो चीयर करो, बिकॉज मैम इज़ देयर, नाउ देयर इज़ नो प्रॉब्लम। फ्रेजेस, समटाइम्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। ये आधा सेंटेंस होता है, मीनिंग तो इसका पूरा होता है, लेकिन ये फुल स्टॉप से एंड नहीं होता और ना ही कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, ठीक है। नाउन फ्रेज, the group of words and increase this does not work, does the work of a noun. This phrase and increase is a noun phrase. Underline the noun phrase in these sentences. Noun phrase पढ़ते हैं, चलिए तो अंडरलाइन करते हैं noun phrase। J exercise. First, please put away your lunch boxes. It's time for the next class. ठीक है, शुरू करते हैं सेकंड पॉइंट से हम। The next chapter in this book tells you about determiners. The next chapters about determiners. Third, your childhood drawings show that you have real talent. Your childhood drawings have real talent. Fourth, 3 sparrows are sitting on the fence. 3 sparrows. Fifth, Superstorm Sandy left many people homeless. Superstorm Sandy. Sixth, the cat is in the hat sat on the mat. Arre babare, the cat in the hat. Seventh, Ayushi read the 10th question carefully. So the noun phrases, the 10th question. Jane gave Elizabeth a warning look. Let's move on. 29th page. I can give you 2 good reasons why I want this tap replaced. 2 good reasons. I found some pretty pine cones in the forest. And added them to my collection of dried leaves and flowers. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज यूज क्लूज इन द बॉक्स टू मेक नाउन फ्रेज। चलो नाउन फ्रेज बनाते हैं क्लूज के साथ। हाउ मच स्टेमिना डज इट टेक टू विन द डैश। नेम ऑफ अ ट्रॉफी, CLUB, क्लब, कप। हैव एप्पल इंडियाज डिस्ट्रीब्यूटर्स लॉन्च द डैश इन इंडिया। iPhone 5. Third, have you seen dash
my tortoise shell spectacles. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. फोर्थ, द डैश रोड मेकिंग द बर्ड्स इन द ट्रीज फ्लाई अवे. तो इसमें आप लिखो द lioness. Fifth, Roald Dahl wrote the BFG. ठीक है. Sixth, do the police know of the jewel theft? JEWELTHEFT, theft. Melissa likes cheese sandwiches. CHEESE. I also like cheese sandwiches. Did you enjoy name of any movie? LIFE, Life of Pi, Pi. My mother would like to meet my music teacher. टीचर का नाम लिख दो. My art teacher, my music teacher, my computer teacher, my music teacher. Traveling by train in the hills is a beautiful एक्सपीरियंस. EXPERIENCE, एक्सपीरियंस. ठीक है भाई, कैसा रहा? ठीक रहा. चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है. नाउन क्लॉज के बारे में हमें पता है. नाउन क्लॉज टेल्स व्हाट समवन सेज, थिंग्स और आस्क. इट यूजुअली आंसर्स द क्वेश्चन व्हाट. ठीक है, याद रखिएगा. अंडरलाइन द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फॉर्म नाउन क्लॉज. चलो भाई ये भी करते हैं. द न्यूज़ रिपोर्ट सेज दैट सुपर स्टॉर्म सैंडी इज अ रिजल्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. I always thought what I could swim. We know that what. क्या पता आपको? International Maths Olympiad is held in different countries every year. Fifth, I got an SMS that from the airlines that what? My flight is delayed. Next, my coach wondered if what? I could practice during the summer vacation as well. Seventh, Rohit took the shoe to the cobbler to find out what? If it could be repaired. Charlie Chaplin said what? Nothing is permanent in this wicked world, not even our troubles. चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. द साइंस टीचर मिसेस रामास्वामी इज कंडक्टिंग अ क्विज. कंप्लीट द सेंटेंस विद WH वर्ड. ओहो, WH वर्ड. कैन समवन फ्रॉम द back row tell me dash new mountains are formed. WH के बनाने हैं ना, तो when. Franny, can you tell me dash was the father of periodic table. WH वाला बन गया who. Fourth, can anyone tell me why caterpillar tracks, why caterpillar tracks are used in battle tanks instead of tires. Fifth, Rahul, do you know dash a matchstick burns when rubbed on the sides of the matchbox? Why? Latika, please tell me what happens when the fuel is burnt. Seventh, students, can one of you please tell me what temperature does water have maximum density? One of you please tell me whom the by whom the galvanometer was invented. More for practice. Do you know the answers of these? हाँ मुझे पता है, मैं आपको बताऊँगी. Keep Sangeeta has listed her ideas on protecting the environment. There is an error in each line. Strike out the incorrect word and write in the correct word. चलो ढूंढते हैं. Keep your car in efficient operating conditioning. अरे conditioning थोड़ी condition. Conserve energy at home. Recycle and reuse paper bottles and old clothes and bookings. अरे भाई books, BOOKS books. ठीक है भाई. Do not use paper napkins. Use cloth napkins instead. Clothes नहीं, cloth, CLOTH. Do not overwrap a gift. The receiver will appreciate the thoughtful gift even if it is not packed in a
फैंसी पेपर होता है, फैंसीफुल नहीं होता, फैंसी पेपर. टेक क्लोथ बैग्स विद यू व्हेन यू गो आउट शॉप, व्हेन यू गो आउट शॉपिंग. SHOPPING. Walk or use a bicycle to go to nearby place instead of a car. Nearby places, PLACES, places. Use private transportation whenever possible. Private नहीं, public, PUBLIC. Create awareness about the problems of using plastic. About the problem नहीं होता, problems होता है. So children, with this we have completed our nouns topic in our grammar and me. If you have liked the video and if it has helped you in doing your homework, do make thumbs up, and we'll meet with determiners soon. Suggest my channel to your friends also. Bye bye.